Next question is, and I think a lot of my friends and even users have asked me this personally also, which schemes and funds are best in the current scenario? It's very difficult to answer. I think we have answered it through many different questions कि कौन सी स्कीम है ये एडवाइस नहीं कर रहे हम. हमारा गोल क्वेश्चन आंसर्स का सेशन का ये है कि हम आपको सही डायरेक्शन दिखा दें या हम आपको गाइड कर दें कि कैसे आप अपने लिए फंड्स स्कीम सेलेक्ट करें. We have tried to tell you both in terms of what category and what strategy you should have. Like SIP select करना है and long term, short term कैसे आपको अपने investment needs manage करनी है. If you are a risk taker, that means you can see the volatility and wait for long term कि returns अच्छे आ जाएं. Then you should look for equity funds. If you want the money in short term, अगर आपको थोड़े टाइम में money की जरूरत है तो आप debt funds या liquid funds की तरह देखें. इनमें कौन सी exact schemes best होंगी? आई थिंक ग्रो पे वेबसाइट पे या ऐप पे जहाँ पे भी आप यूज करते हैं वहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन एंड डेटा अवेलेबल है. उनकी रेटिंग्स अवेलेबल है, रिटर्न्स अवेलेबल है. जैसा ईशान ने भी डिस्कस किया, देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट एयूएम एंड अदर पैरामीटर्स. आप वो देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कौन सा फंड सबसे कंसिस्टेंट रहा है और किस पे आप सबसे ज्यादा डिपेंड कर सकते हैं. वंस यू सेलेक्ट दैट फंड, आई थिंक वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग देन यू शुड होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए. एसआईपी को 3 years 5 years तक के लिए investment कीजिए and then you will see the returns coming out of the fund. Guys, I have one question for all of you. I think सभी ने यहाँ पे जो भी है सबने 2008 का क्राइसिस देखा है फर्स्ट हैंड. तो क्या लर्निंग्स थी 2008 की क्राइसिस से, पर्सनल लर्निंग्स? नहीं, आई थिंक मेरी पर्सनल लर्निंग तो ये थी कि आई स्टार्टेड मार्केट में जस्ट बिफोर दैट क्रैश. तो मैंने उस समय मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं होता था तो मैं थोड़ा सा ही डाल रहा था. तो दैट वाज गुड फॉर मी एज वेल कि क्योंकि मार्केट के शुरू में जब मार्केट टॉप पे चल रहा था तो कम पैसा डाला, लेकिन जब मार्केट गिर गया तो मेरा पैसा ज्यादा नहीं गिरा बिकॉज मैंने बहुत कम डाला था. तो लेकिन जब मैं और पैसा डाल रहा था उसका बेनिफिट काफी हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग हाइंडसाइट बायस बोल देते हैं कि आज मैं अगर सोचूं तो मैंने जब पैसा डाला था तो मैंने मल्टीपल टाइम्स डाला था. उसकी जगह अगर मैं बॉटम पे पूरा का पूरा पैसा डालता तो मैं बहुत पैसे कमा सकता था. लेकिन अच्छा पार्ट ये हुआ कि मैंने स्टिल ऐसा नहीं किया कि पैसा सारा का सारा टॉप पे डाला. तो मैंने पैसे को स्प्रेड किया जिसके कारण आई वॉज एबल टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एंड स्टिल पैसा लूज नहीं हुआ. Yeah. So actually, my learning has exactly been similar to Ishan, but a different approach to it. तो जैसे 2008 में what I remember very clearly, तो मैं stocks में invest नहीं कर रहा था. I had some money जो मैं सिर्फ mutual funds में ही invest करता था. And you know, because of age or knowledge gap, I was trying to time the market. Always trying to time the market. और उसमें हमेशा मैंने देखा जो exactly I can remember it exactly अभी जो मार्केट में हो रहा है, this is exactly how 2008 happened. Someday it will be +5%, someday it will be -10%, and you will not know कि कब consistently growth होता रहेगा. So you will be sitting on FOMO कि आज +5% हो गया, अब तो बढ़ता रहेगा तो आज इन्वेस्ट कर देते हैं. फिर -10 हो जाएगा, then you will be losing out all hope कि अरे ये तो सारा पैसा डूब गया. So one thing which I have realized after that कि if you're investing in mutual funds, you should never ever try to time the market, and you know, at least you know, if think about doing SIP or think about doing a sustained a continuous investment and not look at timing the market, because volatility will continue at least in a market like this. Yeah, for me 2008 is more of a regret feeling that I did not invest. मैं 2008 का जब थोड़ा सा मार्केट क्रैश होने लगा था तो I behaved I think like most of the people users I am talking to now are asking that market गिर रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट बचा है पैसा निकाल लो और वेट करेंगे जब मार्केट एकदम बॉटम पे आएगा. And I think I don't know when it came. When I saw last next to that, market was already up, everyone was buying and everybody had booked profits from it. I think I missed that cycle, and by just not not staying there, I just withdrew everything. Great. What was your learning, Lalit? So for me personally, it was very, very interesting experience because there were some companies. So I was not investing in mutual funds. मैं सिर्फ stocks में invest करता था.
और मैं कुछ स्टॉक्स में 2003-2002 से इन्वेस्ट कर रहा था, और वो बहुत अच्छी कंपनीज है, मैं उनको इतने सालों से जानता था, लाइक आई वाज यूजिंग देयर प्रोडक्ट, आई वाज उनकी पूरी, मेरे को एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता था, मेरे को सब पता था। और 2008 में फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि जो इतनी अच्छी कंपनीज थी, जो पहले एक साल पहले एवरीबॉडी वाज सो बुलिश अबाउट देम कि ये इतनी अच्छी कंपनी है, और सडनली लोगों का सडनली मूड चेंज हो गया कि नहीं ये तो बहुत खराब कंपनी है, मतलब दे वर अवेलेबल वेरी वेरी चीप। तो आई फाउंड इट लाइक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी at that time, and kind of at that time मेरा risk profile काफी अच्छा था, I invested heavily in all these companies, and luckily it turned out good for me. The lesson was like the biggest lesson was कि if you can control the fear at the right time, or the other way around also, if you control the greed at the right time, you can make very good money in the markets. But again, being said that, it was very difficult. It's very difficult when people around you are very pessimistic, when companies are not doing good, and so on. So best, like what I have realized for a lot of my friends, what worked out for them was like they continued through the market, they continued through the SIP, and I think today they are sitting on quite good net worth. Great. So I think the questions that all the questions are we have taken all the questions. जो last एक I think I want to just have everyone's view on it is, so a lot of the users are very young, and probably this is the first time they started investing in last few months. Uh, uh, so first investment, and now they're seeing their investments in red. How should they manage their own psychology? How should they manage their own emotions? So I think I have seen this exact kind of feeling when in 2008 I was doing it. So 2008 I remember कि Reliance Power का IPO आया था. So I think that was my first investment, which turned out really bad. But एक चीज what I started looking at is instead of looking at what is red or what is green, I started looking at how much money actually I am losing. So if उस समय मैंने I think Reliance के IPO में कुछ जितना एप्लीकेशन किया था उससे काफी कम मिला था, अराउंड 10-15 हजार का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, और वो उसमें से आई लॉस्ट लाइक 5,000-6,000 रुपीज इन फ्यू वीक्स इटसेल्फ. बट जब भी मैं देखता था 50% डाउन है तो मुझे डर लगता था, लेकिन जब मैं देखता था कि 5,000 रुपए मैंने लूज किए हैं तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग डील. सो आई थिंक you have to start the guys who are starting new, I'm sure most of them would have invested a lot of amount in the market, and even if it's down, अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट में देखेंगे तो इट विल नॉट बी अ बिग डील. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट परसेंटेज योर इन्वेस्टमेंट्स इज डाउन, स्टार्ट लुकिंग एट हाउ एब्सोल्यूट अमाउंट इट्स डाउन बाय, एंड विल दैट मनी एक्चुअली रियली मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ और नॉट. कि अगर मैं आज के दिन में 5,000 रुपए के कारण मेरा घर नहीं चल रहा तो प्रॉब्ली दिक्कत है, बट अगर 5,000 रुपए से उस 5,000 के चक्कर में आपकी अगर नींद खराब हो रही है तो प्रॉब्ली आपको नहीं करना चाहिए. तो इसलिए ऐसे सोचे कि वो जो पैसा है वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके लिए. तो इसीलिए आई थिंक ललित भी पहले बोल रहे थे जैसे कि आपको एक प्ले मनी की तरह रख सकते हैं, जिससे आपको अगर कल को उसमें से 50% भी लूज हो जाता है तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए. और ये जैसे ईशान ने बोला आप अपना एब्सोल्यूट पैसा देखें, उसी पे ही आप, दिस इज आल्सो ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है और आपको भी आगे जाके पता चलेगा. आप अभी आप काफी सब लोग काफी यंग होंगे कि द अपॉर्चुनिटी कम्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटीज. तो दिस इज द टाइम व्हिच एक्चुअली यू शुड एक्चुअली सिट बैक एंड थिंक अबाउट हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी. आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना रिवॉर्ड चाहते हैं. तो जैसे अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन है, आपके पास ओवरनाइट फंड्स ऑप्शन है, जिसमें आपको 5.5 से 7% तक रिटर्न मिलेगा, और उसमें आपका पैसा काफी सेफ है. अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अनलाइकली है कि आपका पैसा कभी भी डाउन आएगा. और ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, आप इससे हमेशा इम्यून रहेंगे. तो आप अगर लॉन्ग टर्म में उतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी अगर रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है तो आप वहां पे इन्वेस्ट करिए. And there is nothing wrong in it, right? कि आप, doesn't matter कि what other people recommend, you have to make this choice for yourself. हर किसी का रिस्क एपेटाइट, हर किसी का पैसों को लेके जो लगाव होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. तो आप अपना चॉइस खुद करिए
और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो 80% पैसा अपना नॉन वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए। पर अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, अगर आप डबल डिजिट रिटर्न्स चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे 6% बहुत कम है, मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। एग्रीड कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ some instrument and the way our economy has been functioning because of COVID-19. But as we said, this too shall pass. So over a longer period of time, markets will come back again. This will revert back. But at the same time, you should think back about how you want to handle your investments and आप अपनी wealth over a period of time कैसे create करना चाहते हैं. Hey, there is a saying that managing the portfolio is less important than managing yourself if you really want a good portfolio. And there are बहुत सारी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो जो ये आपको सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी को, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए. एक बहुत अच्छा सजेशन ये होता है कि आप ब्रेक ले लीजिए, वेकेशन पे चले जाइए. दूसरा होता है कि न्यूज़ को इग्नोर कर सकते हो. बहुत सारी जो न्यूज़ होती है वो नॉइज होती है, उसमें सिग्नल वैल्यू बहुत कम होता है. और जो भी लॉस आप देख रहे हो पेपर लॉस है. इफ यू रियली बिलीव इन व्हाट यू इन्वेस्टेड इन, तो फिर things will be all good. And I think what has helped me the most, when I was young and started investing, was to talk to people who have been investing for long. जिन लोगों ने काफी सालों तक इन्वेस्ट किया है, आई थिंक जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, वैसे ही जिन लोगों ने काफी टाइम से इन्वेस्ट किया है, उन्होंने एक दो साइकिल्स ऐसे देखी हैं. उन्होंने भी कभी स्टार्ट किया होगा, लॉसेस देखे होंगे, बट नाउ दे कैन टेल यू कि कैसा हाइंडसाइट पे कि कैसे हाउ दे स्टेड एंड नाउ व्हाट आर द रिजल्ट्स. आई थिंक दोज विल बी कंफर्टिंग थिंग्स. And definitely, I mean, read books and learn about what is the right way of investing. This all will help. Yeah, one more thing what I want to tell is, जो बहुत सारी न्यूज़ आप पढ़ते हो और जो देखते हो, वो जो भी प्रेजेंट करते हैं और जो भी आते हैं, उनका गोल होता है आपको ज्यादा बाय सेल कराना. बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो काम करती है वो आपके ट्रेड्स पे पैसे कमाती है. तो इसलिए थोड़ा उसको इतना एक्साइटिंग बनाया जाता है न्यूज को. मार्केट वेंट अप 5%, Sensex fell down 2000 points. 2000 points from percentage point is something else, but 2000 point looks so big, right? It scares you away. Like this stock fell this much. So ये भी बताएंगे कि अच्छा ये गिरा इसलिए गिरा, क्योंकि ऐसा हुआ. तो असली में कोई भी नहीं बता सकता, but it's all conversations happen because मार्केट में एक्टिविटी चाहिए होती है. लोग चाहते हैं कि लोग ज्यादा खरीदें, बेचें, लिक्विडिटी बनी रहे. So I think if you are smart, if you are wise enough, you can play well, you can control your emotions and play with the situation, right? Okay. So next question is, how are we managing our money? I think a lot of people are curious to know, how are we managing our money? Lalit, do you want to start? So I am continuing my SIPs. Most of my net worth is in, so it's split between debt and equity. Or what I try to do is I keep my asset allocation same. So for example, मेरा 50% debt में 50% equity में. अभी equity नीचे जा रहा है तो I'm moving some part of debt to equity. तो मैं I have to remain that 50-50 kind of weightage in my portfolio. Varun? Yeah. So I follow a little. मेरा एक स्ट्रक्चर सेट कर रखा है on how do I invest, and I have changed a little marginal depending on how market, क्योंकि market बहुत नीचे गए हैं. तो जैसे if I get a salary of X, so X का, so first initial years of my life, when I was saving, मैंने एक emergency fund create किया था जो मैं highly liquid, जैसे highly liquid means कि मैं पैसों को कभी भी withdraw कर सकता हूँ, उस इंस्ट्रूमेंट्स में रखता हूँ, which is about 6 months of my which is 6 months of my requirement. तो अगर मेरा खर्चा per month का about is 1.5 lakhs, तो I have kept about 9 lakhs there, जिसपे मुझे nominal interest rate मिलता है, which is about 6-7%.
remaining money जो बचता है, I take about 70% in mutual funds and 30%, as we were talking about, the play money is my play money which I use in stocks. इसका proportion मैंने थोड़ा अभी 10% से बढ़ा दिया because this the market has become a big playground. So I am trying to play a little bit more, but again it was 80% before in mutual funds. Now it is 70% mutual funds and remaining is in stocks. For me, it's very simple. I have 5 SIPs and I'm continuing to do those SIPs. I haven't changed much. So मेरा थोड़ा different approach रहा है. So I think what Varun does, I also do something similar. तो मैं कुछ component हमेशा वे अपना cash में या liquid fund में या something जहाँ से मैं जल्दी निकाल सकता हूँ रखता हूँ. तो वो 10-15% of my portfolio होगा. और दूसरा चीज basically again SIPs चल रहे हैं. At the same time जो मेरे major investment, अगर stocks में जो investment है, मैंने actually उल्टा किया है. I have reduced investing in stocks. Earlier I was doing more. मुझे लगता है कि अभी बहुत volatile है और बहुत time spend करना पड़ता है उसको देखने के लिए कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है. So I have started actually putting more money in mutual fund and putting less money on stocks. But still I will have like 10-20% of my portfolio in stocks. Okay, so I think सारे questions answer हो गए हैं. So thank you so much everyone, and we've tried to answer most of the questions. And if there are any specific questions, we'll be answering to you personally through the email. The same answers will be also available on our blog. This video will be available on our YouTube channel. You can look at it and you can share it with anyone in your circle जिनके भी same questions हैं, या आपके friends को भी अगर investment की anxiety है या कुछ questions हैं, they can be benefited. And we will continue doing these sessions in future. अगर आपके कुछ questions हैं specific तो आप हमें भेज दीजिए, नहीं तो हम वापस से form भेजेंगे where you can ask more questions. We will come back. And एक important चीज बता देते हैं, just like many offices, Grow is working completely 100% work from home. Everyone is at home, and that is the reason why you're seeing us in different windows on this video and not sitting in one room. हम सब साथ में बैठ के नहीं वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि हम work from home policy follow कर रहे हैं. So our entire company, our support staff, everyone is working from home, and we are trying कि हम आपके सारे questions and आपका experience Grow app पे और website पे आपका investing experience को continue रखें जितना smooth है, and in fact better करते रहें. So हम we'll continue to make the experience smoother and better. हम पूरा effort मार रहे हैं कि आपका investing experience सबसे best और smooth बने. So thank you so much and everyone for asking these questions, क्योंकि इन्हीं question के answer से बाकियों को भी काफी help मिली है. And our advice is to stay healthy and work from home if possible and continue investing. Thank you.